Good morning, namaskar, good day. This is January 16, 2021 and Saturday. Back to you to confer with you current state of COVID-19 in hours. Hours equal to Bharat, India, our country. We have to think of very seriously and we have to do something about this. हमें कुछ सोचना होगा, करना होगा, नहीं तो नुकसान तो होना ही है. बार बार कहने से तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन डेली रिपोर्ट तो डिस्कस करनी जरूरी हो जाती है. Today, January 16th, 118 day of our serial number. Title being Bharat India, an analytical informative talk on COVID-19 plus variant, that is strain variant status for January 15th, 2021, yesterday, reported on January 16th, that is today, 2021, and data provided by government, and we have worked out spreadsheet as often we do conventionally, and I just try to make more and more analysis and more awareness to people of this country so that they are educated. It's my attempt. It's up to people how they take it. How they take it, it's up to them. This is, you can see on this screen, 118th entry today, and that is here. 118 entry on January 16th, where 18.57 crore people have been tested, and yesterday only 8 lakhs people were tested, which is a point to worry about. And if you compare it to last day of last year, closing day of 2020, is down by 40%. Is not even at par, but down by 40%. That is point of worry. And here you can say 1 crore 5 lakhs 42,841 people so far have been recorded or registered as COVID patients. Yesterday's record says 15,158, which is down according to them, but percentage of total population here is 14.29, and remaining population which has not been tested is 18.85.71. And you can see this graphics. Now we move on to this main part of analysis, which says that yesterday's statistics provided by government of this country, it's up to here. This is what they provided, and here is total cases list, and others are, I'm not going to speak, and this are ratios I'm going to work out for our analysis, and this is, you can say states and unit names, and here is our control points which you have to refer to, and this is our projection area, what I can presume or forecast, and this is combined graph, and this is crores cases which are active as well as number of deaths, and this is claims by government, and this is what should be done. All are here, so let's go one by one. Maharashtra, I will speak in short. Maharashtra 9.85 lakhs total cases up till now. It is not yesterday's cases. Maharashtra 19.85 lakhs, Karnataka 9.31 lakhs, Andhra Pradesh 8.86 lakhs, Kerala 8.37 lakhs. Then you can say, let's put a little up. Okay, fine. Tamil Nadu 8.3 lakhs, Delhi 6.32 lakhs, Delhi 6.23 lakhs, 6.32 lakhs, Uttar Pradesh 5.96 lakhs, West Bengal 5.64 lakhs, Odisha 3.3 lakhs, Rajasthan 3.15 lakhs, Chhattisgarh 2.93 lakhs, Telangana 2.91 lakhs, and Haryana 2.66 lakhs.
Bihar 2.57 lakhs, Gujarat 2.55 lakhs, Madhya Pradesh 2.51 lakhs, and Assam 2.17 lakhs, and Punjab 1.7 lakhs. Jammu and Kashmir 1.23 lakhs, Jharkhand 1.17 lakhs. Jharkhand. Uttarakhand 94,465, Himachal Pradesh 5,680, Goa 5,226, Pondicherry 3,859, Tripura 333, Manipur 2881, Chandigarh 2046, Arunachal Pradesh 168, Meghalaya 136, Nagaland 120, Ladakh 96, Sikkim 602, Andaman and Nicobar 49, Mizoram 43, Dadra and Nagar Haveli 33, Lakshadweep 0. Here and total cases, active cases, and discharge cases, you can read if you wish, and these are ratios of 3 items here. Ratios of 3 items here, which I use here by our formula of projecting. Average I am taking here, and this is average of active cases, this is average of discharge cases, and this is average of deaths, and this is sum of these two, this and this is sum of this, and you can say that here. Now I have tabled like this is month, then definition of hazard, then death percentage, active percentages, deaths in crores and active cases in crores, and population, and this is what is ultimate impact of this. Here a period of 2 years has been taken. It can be reduced or it can be increased. If you wish, you can just pull it down and you can get how you do. It's not a big deal, you can do it. Means if you wish, it's up to that. Let me say I take it down just to show to you what to do. Means here I do it and I can pull it like this. Maybe I don't know what to do. See, example is this, like, if I pull it down like this, it can be even taken up to 55 months or more. So that is what it is. So it is just tabulation formula. I go back to saying one which is before, and it's that one. Okay. Just for your information, I did it. So it's nothing. You have no contribution in that. You just pull it down, and that's it. Now that percent is 1.2, which is given by here. Though I don't know, every day they are giving 1.2%, 1.2%. They have some formula or something, I don't know, but 1.4, for example, yesterday, if you go and see yesterday here, you'll find same thing. Here 1.2 is 94.49, 1.53, and here is little difference here only. In 1.53, they have brought down to 1.48 and 94 point. This was 94.49, they are 94, but this is an increase just to show that they are doing better. This is, I think, calculation policy or some policy may be having them, and combination is 2.69 here, and yesterday it was 2.73. So they are trying to bring down this figure just to prove that they are doing better than before, but they forget that they cannot manipulate things like this. There's no manipulation in this. This is factual statistics we are dealing with. Well, no problem. I have no clash with that. I agree what they say, but they should speak for 130 crore people, not for only those people here who have been tested, and it's for only those people, that is 14.29%, and remaining 85.71%, or you can say 111.42 crores people have no say in this. And this is up to 16th, I'm sorry. Okay, up to 15th, finish, no problem. It's yesterday's status, so I don't want to change it. Means this 1/7 report they are giving you, 15 into 7, you can say about 100. So you can easily now understand 1/7 report. This is 1/7 report of one. So in 3.5 crore people are actually it's according to this 2.69, 3.5 crore people are affected. Now, first month, let us say we agree what they say with 1.2% deaths. Okay, we agree. No issue here. If it is 1.2% death, they themselves admit, publish it. So that's our. If you apply this figure to whole population rather than what they say, it is 1.57 crores. This point must be clearly understood. This is nothing like rocket science or
or complicated science. This is very ordinary calculation. The 130 crore population can be multiplied by this value, and we get this value. And also active cases, that's 1.48% here. This is here, anyway, this will be crossed, no problem. 1.48%, and we get 1.93 crores, active cases also. This means these two are valid data entries. Now, when I say that I consider a period of 3 months at every cell here, 3 months, 3 months, 3 months, and I can apply a coefficient of 0.25 everywhere. You can see everywhere coefficient 0.52, and it is here also 0.25. So we get these values, these values we get in death cases, or we can see if I select two cells, you can say death and active cases, we get this value. You can see that, and you can see that like this. We can get these death values in crores, and these are active cases values in crores. You can say 9.33 crores deaths and 9.33 crores, that's 11.5 crores active cases. This means 21 crores in all here itself, if you consider period of 25 months. And this is 130, which is actual population, and I have taken in formula this so that it can be pulled down. So this is what I'm trying to say. And if you say in this position, this is your graph, which says all these 4 or 5 curves or lines, and months, population hazard, death percentage, active percent, death percentage is this, and active percentage is this here, and all data is given. This is the population line, and this is crores, active deaths, and this is crores death here, crores death, crores active, this is crores death, this is crores active, and you can say months, this is here, this is the months here, and this is, you can say, population effect. And also this diagram, which is separate one, which gives active numbers as well as death numbers. Crores, this is active, and this is death. This is period here, and this is your percentage wise or population wise, you can say, crores death. These graphs you have. And here is government claim, which says we are doing everything, don't worry about this, the public is cooperating with us, and there's nothing left. Means this is what they claim. But what is demanded is, what is understood is, you have to treat self, vaccinate self, isolate self, everything is provided by patient, and they are just going to claim credit. This is what it is. No problem to me at all, but I want answer to this matrix of text matrix is there, and there are many questions raised, not by me, by situation itself. We respect what government publishes, but government must respect analysis also. But there is no feedback from government, no response from government. That's unfortunate. Whole population is involved, and government is involved. People expect government to do something, but practically we do not expect anything. Question is it failure? We did not contain it, and we could not defeat it. We failed to contain it, we failed to defeat it. We got no destinies, no milestones fixed at all. And in any case, and there are 3 classes which require to be defined, and these cannot be fixed due to no information available. We have to construct some schedule or schedule, you call it, and that plan cannot be worked out if we don't have sufficient data. We cannot chart anything, and this can move for whole decade. What we require is, we require testing scheme, we require treatment scheme, we require discharge cases handling,
and we require vaccination inoculation, which is going to be in progress by title only, and there is no plan available till now, no plans in this regard, and they say that 3 crores only shall be vaccinated in coming few months or many months. We don't have objection to that, but give us definition, give us scale, give us program. That is where requirement is. These requirements are all blank. That's why I cannot say anything with confirmation here, and we have therefore to go back to main file and see, come back here. You can see this unplanned, uneven graphics, which is carrying about, generally all entries. If you see that one, all entries, which is carrying all these 118 entries, and it will go on increasing every day. You cannot stop it. Now, point is, if you go and see from December, here, if you see this, in this case, in this, you see there was some value here, there was some value here, you can see here, some value here, and here some value. All these are dropping, marginal increase, but total drop is here. That is one, this 40% down when you compare to yesterday. It was higher down, but they have just increased something, so it has become down. So it is 40% down if you start comparing with ending or closing day of 2020, and here this whole days, you can say here it is astronomical fall, which cannot be accepted, and because of that, this and this period are challenging one. You say you require 11, 18 days for future program of testing by virtues, not by plans. And importantly, these are 4 more cells which give you reasonable and logical values, because these 4 cells are for last 4 days, including yesterday, and these say how many people were tested, and out of those tested, how many positives were detected, percentage of that. So you can see percentage 1.91, then 2.28, followed by 2.14, and finally followed by 1.89. So average is 2.05. 2.05% people are detected positive, which means 2.67 crore people can be detected positive if whole population is tested. This is point of worry, but we should not be stopped here. Should not stop here. We have to announce, means as usual I say, just read postings. Maybe you don't read, but it is report day January 16th, that is today, 2021, pertinent effect day of yesterday, that is 15th January 2021, and we can call our inefficient managers. Yes, they are inefficient. Managers may be ministers, managers may be officers, whoever involved in management of COVID-19, we can say that they are inefficient, I can say with full proclamation. Because we can say that report day, there's no risk controls, no answers from government or from nation, and I don't want to be deceived by just replacement of vaccination. No, vaccination is not final treatment, and there have been misleading reports from various parts of the world that these vaccines are not very perfect. Well, I have no challenge to that. There is no hint for risk management and marginal erosion. Now, title you have seen, you can read, that's no problem. I don't repeat title here. I will say there's no plans provided for provisions of vaccines even. And purpose of vaccine is just to augment immunity levels, and you have to pay for that as well, except those who are warriors or who are doctors and medical people, for whom vaccines would be inoculated free. Now, what government claims, we have to understand again and again, which claim I can say with warranty and guarantee that this is hoax, futile and unrealistic. They claim, according to Portal, quote from Portal, it is not my claim.
They claim Government of India is taking all necessary steps to ensure that we are prepared well to face challenge and threat posed by growing pandemic of COVID-19 coronavirus. With active support of people of this country, Bharat, India, we have been able to contain the spread of virus in our country. Most important factor in preventing spread of virus locally is to empower citizens with right information and taking precautions per advisories being issued by Ministry of Health and Family Welfare, unquote. Now, how much is that, right? कितना ठीक है इसमें से वो कहते हैं भारत सरकार सारे स्टेप ले रही है जो ज़रूरी हैं इसको संभालने के लिए, कोविड-19 को इसको दबाने के लिए जो बढ़ रहा है, और हमने सारे काम कर लिए हैं इसमें, और हम जानते हैं कैसे रोकना है और रोक चुके हैं। कैसे रोक चुके हैं मुझे नहीं पता। इसमें वो कहते हैं जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावर करना है, उनको सही सूचना देनी है और बताना है क्या करना है। अब बताइए इसमें आपको कितना मिला है, आप खुद जान सकते हैं, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। वास्तविकता क्या है हम जो समझते हैं, एंश्योर सेव, अपने आप को सेफ रखने के लिए टेस्ट सेल्फ, ट्रीट सेल्फ, अपना इलाज, अपना टेस्ट कराइए, अपना इलाज कीजिए, वैक्सीनेट सेल्फ, अपने आप ही इंजेक्शन लगवाइए, आइसोलेट सेल्फ, अपने को अलग कीजिए, ऑक्साइड इफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सेल्फ, जरूरत पड़े तो खुद ऑक्सीजन लीजिए, वेंटिलेटर पे खुद जाना होगा पैसा देके। डू ऑल एक्टिविटीज योर सेल्फ ऑन योर ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट। भारत सरकार पे निर्भर ना करते हुए ये सब कुछ काम आपको स्वयं करने होंगे। सेल्फ मीन्स पेशेंट्स एक्सपेंसेस, सेल्फ मीन्स ऑन पेशेंट्स एक्सपेंसेस, जो रोगी है उसको अपना खर्चा करना पड़े। गिव गवर्नमेंट ओनली क्रेडिट, भारत सरकार को खाली क्रेडिट चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। क्रेडिट ऑफ दोस्त डिस्चार्ज, जो अस्पताल छोड़ के चले गए, घर चले गए या आइसोलेशन रूम से बाहर आ गए, वो सब सरकार का क्रेडिट है, जबकि खर्चे आपके सारे हैं। एंड क्रेडिट ऑफ ऑल कंट्रोल्स, वो सारे कंट्रोल जो ले रहे हैं आप स्वयं, वो भी सरकार उनको अपना क्रेडिट मानती है। कीप रेडी मैनी लाख रुपीज़, लाखों रुपये अपने पास रखिए अपने इलाज के लिए। कीप रेडी मैनी लाख रुपीज़ फॉर एक्सपेंसेस और सफ़र फॉर एवर, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तंग होइए। बिकॉज वन में ऑल्सो बी इन्फेक्टेड विद स्ट्रेन एंड वेरिएंट, क्योंकि जो नया इसका नया बाप या बच्चा आ रहा है, स्ट्रेन और वेरिएंट, वो भी आपको तंग करेगा। टेक योर केयर फॉर पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और फ्रॉम आइसोलेशन रूम ऑन योर ओन एक्सपेंसेस, जो भी करना है आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। एंड आफ्टर दिस आई हैव प्रोवाइडेड, इसके बाद मैंने 42 URL दिए हैं इस पोस्ट में, जो पोस्टों के हैं, मैसेजेस के हैं, एंड देर आर about 55 URLs of videos excluding today's, today will include later on. So these videos are available, URLs available, past one, if you want to see, you can see them, you can view them, if you want to know what I talked in last videos, past videos. Okay, no problem. Now I'm talking about this virus issue of yesterday and approach it today. Now Bharat public must think very seriously about how to achieve risk loss prevention by application of required pertinent measures in relation to COVID-19 plus explosion. Because nothing is being done, seriously done by our government, our nation. I should say nation rather than government. Government, if I say government, you take it politically, though I know connection in politics. This is no loss prevention method. Incoming vaccines shall not impart any recovery, treatment, solution or regular protection, but only immunity augmenters. Building or other items, articles always remains prone to fire, but if loss prevention methods are applied in advance, loss to life and property can be minimized. So this also applies to COVID-19 plus. Possible magnitude of risks must be understood or evaluated by analyzing its power, and then based on analysis, practical applicable solutions must be searched and finalized prior to it is too late. COVID-19 strain variant has already spread in many countries. Names: Brazil, Bharat, Canada, UK, Australia, European areas, many countries in Europe, Germany, France, Italy, Singapore, Hong Kong, Sweden, Australia, Austria, Jordan, many more. Means there's no limit at all. I think one day it will enter all nations. UK PM ignored acting upon given advices, given information of strain, variant, migration from Brazil. Consequently, public has been suffering.
from COVID-19 plus. Per actual reports from UK, 1 in every 5 has been reported infected, which means that 20% population has been infected. And 1 in 3 reported asymptomatic, means without any symptoms, they have been contracting COVID, which can also happen in our country, Bharat, India. Even though reports from ours are fact, reports from ours are, people say that officials' report from UK too are not reliable. Factors are these. There are 1 lakh people have been expected to die. 83,000 have already gone. 17 remaining thousand would also go if thing, and more than 3 million infected, which may rise to 5 billion. Bharat, India has crossed many days back 1.05 crores COVID-19 and also many cases of variant strain, say 102 cases have been reported from various parts of Bharat, India. Individuals out of 130 crores, only 18.576%, crores, only 18.576 crores or only 14.29% population tested in 322 days since 2020 March. And remaining 85.71% population certainly stands untested. No worry for COVID-19 strain plus people on government, on people of Bharat, India, as mostly people of ours have become sheer careless, irresponsible and ignorant, whereas this problem has been rising every day since March 2020. No plan is available for those who have not been tested, who have been remaining untested, say 85.71%, which has made it impossible to fix certain required milestones and schedule out prospective time-scale-based plan to combat COVID-19 impacts. Seems that in false contemplation of vaccines provisions, people have neglected necessary ground organization of initial testing to detect patients and provide them with mandatory treatment. It's a must to have a concrete schedule or plan to control COVID-19 plus and itself, just to avoid its powerful explosion that could cost crores lives directly and many crores additionally infected, and also to give post-discharge care, to provide post-discharge care which may be required 6 months later after your discharge. We observed that more than 56% of those discharged after formal treatment did recontract symptoms of COVID-19 in one way or other. Testing speed has been very, very non-conducive, extremely unsatisfactory, which means no plan can be charted out at present state. Requirement of testing plans, inoculation plans, treatment plans, and post-discharge care plans are not available, as must be affected professionally, which missing details clearly indicate that we are a sleeping, inefficient nation. The real state of future of COVID-19 in Bharat, India cannot be correctly either forecast or predicted analytically in absence of such plans or schedules. In this connection, I had sent mails to government many days back, weeks back in 2020. Acknowledgement was received, but no further information was provided by government. That's upsetting situation. The government is so careless, they don't even talk to people. I'm regretful for that. I don't want to talk on that. No change or accelerating program is visible. No projection of whatever program should be is available. In fact, testing speed has been still really outstandingly unsatisfactory, whereas government has always tried to reflect least number of positive cases detected by manipulation of available data. No reported indication seem to be on part of government. To an extent, testing on whole population is related or concerned. In case of no right reliable data available, no projections can be reflected. Government doesn't take any responsibility, doesn't own any responsibility for testing of common citizens. It's assumed to be responsibility of citizen itself.
if one feels that it is affected, one is affected, symptomized by COVID-19 plus or COVID-19 itself. Government has distanced itself from owing public health responsibility. Tests total conducted till yesterday, this 15 January, is 18.57 crores. And yesterday itself, 8 lakhs only, more than 8 lakhs. Total corona infection till yesterday, 15 January 2021, that is 1.054 crores. And positive infected cases declared on yesterday, 15 January 2021, 15,158 per test based manipulated data by government of this country. Population tested is 14.29% till now since March 2020, that is in 322 days. Remaining population that is stands 85.71% never underwent testing. Time required for whole population according to calculations is 1304, and time required for remaining population is 1304 days, 1118 days, which is more than 3 years. Now this period of 1304 or 1118 days required admissible to people of this country or not admissible. These people of this country have to decide, they have to consider the national interest very seriously, but public has been absolutely silent with no word to speak against government, reason being well understood. Why is government not improving its bad performance? I cannot say, no answer. They shall not respond just to protect its own skin. They have got very thick skin. Government doesn't intend to speak anything in this regard. They just publish data and they think they have done their job. And it's also true that if you do not answer anything, you are silent, people will say there's nothing, no problem at all. So poor and lower class people have been ignored. There is a sleeping government and sleeping public as well. Both are sleeping, worryless people, worryless government, worryless society. Explosion has to come and they have to face it. There is no anxiety in government to test all citizens. There is no such indication, no such plan. All have left their responsibilities. Public has to suffer, poor has to suffer, upper class can manage, but poor has to suffer. This is what I can say, unbecoming state of public. People are suffering, shall suffer. They are violent, they can't speak, they are slaves. They are not slaves legally, but they have become virtual slaves of this regime. I don't know why. People are responsible, government is not responsible. It's a very clear answer. No, nobody can save this. Funds, where are going, nobody knows. Where funds have been going to, nobody knows. And even if funds are not used, public has to use its own fund. So you have to use your own funds. No such. Don't worry, don't think the government shall help you. No policy exists and there is no expectation of any policy to come in. So you have to spend everything on testing, everything on treatment, everything, whatever comes in your way, and lakhs of rupees you have to keep for this purpose. You are 1 member or 5 members, it doesn't make a difference. You have to provide money for isolation room. If you can't maintain that, you have to provide money for hospital room. You have to provide money for test. You have money for treatment. You have to provide money for oxygen. You have to provide money for vaccination. You have to provide money for whatever is expended. You have to employ some attendant. You have to spend money on that, and you spend money on everything, whatever is there. So don't worry about that. You have to spend lakhs of rupees, means medicines, injections, oxygens, ventilators, PPEs, whatever is there required, you have to afford yourself. Nobody is coming to save you from that point of view. Achha. If you stay in hospital, room rent itself could cost you around 10 to 20,000 per day. Your medical attendant at your home may charge you 1,500 to 3,000 rupees per day, and testing may charge you 1,200 to 2,400 rupees per day. This is a record we have. I have undergone all such expenses for our people. So that's why I am giving information with full confirmation. So whatever happens, explosion has to occur. And due to inefficiency and sleeping attitude of people and lethargic public and lethargic government, we have to face it. We are not serious. Nation is not serious. Government is not serious.
and society that remains non-serious and sleeping, you have to face all this. We have to resolve problem, but we cannot resolve. We cannot think you want to resolve problem. Forget we are going to resolve problem. We have to wait for many years, and that's not permissible practically. If you can wait for 3 years, in 3 years, I think majority of populations have been impacted by this. And you can say, if you have to speak, you have to do something, and if you fail, you will fail in COVID. COVID will win, you will be defeated. You will fall. Gods are sleeping. So ultimately, I can say again, I repeat, test yourself, treat yourself, vaccinate yourself, isolate yourself, oxygen provision yourself, ventilator service yourself, self-medicine, or patient assessments. Government only seeks credit and they claim credit. Credit of all controls, so spend lakhs of rupees on these treatments. So I'm sorry to say if somebody feels it, but question is not feeling of people, question is of reality of life. That reality is very much serious, and we have seen our charts, our graphics, what is happening here. You can see it's no meaning every day we repeat everything. This text must be answered, and nobody is answering this. When nobody answers this, we have to take into our consideration how it is working. That is most important point. If we understand this, we have to see how it is. You see these controls here. कौन है एमडी भाई आ रहे हैं खुला हुआ है we have these controls and we have to take care of these controls. We have to take care of these controls. Testing, treatment, handling, post-discharge handling, and vaccination. These three controls are there. These four controls. Immunity, I am putting as immunity, not as control. These are mass control. These must be answered. Who will answer them? इन कंट्रोल्स का कौन आंसर करेगा? टेस्टिंग क्या हो रहा है? टेस्टिंग का कौन कर रहा है? कैसे कर रहा है? कब कर रहा है? कब तक खत्म होगी? ट्रीटमेंट का क्या हो रहा है? और जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका क्या होगा? ये सारी बातें बहुत जरूरी. वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल दिस. ये बहुत जरूरी है सोचना. अगर हम इसको नहीं सोच सकते then we are putting our people into danger. Vaccination is there but no plans. It's very surprising. You are not planning, but you are assuring you will test, you will vaccinate all. Is it joke in 130 crore population? You have to think. क्या? Sorry, हाँ? यार अब क्या करना है उसका? देना था ना सर, आप बोल रहे थे बात कुछ नहीं आना तो रख दो लाके. It's very much surprising that we don't have anything in this, and we have to understand that point. How can we understand? We do not know. We have to think of this. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये देश का. हमको समझना होगा, नहीं तो हम जहाँ पहुँच गए वहीं पहुँच के रह जाएंगे. ये बात बहुत ज़रूरी आपको समझनी चाहिए. अगर हम इसको नहीं समझते तो ये हमारा ही नुकसान होगा, और हमको ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम देगी सबको, देश को, पब्लिक को. अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते तो मैं क्या करूं इसमें बताइए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ख़राब प्रॉब्लम भी हो सकती है. आप नहीं संभाल सकते तो ना सही, कौन संभालेगा इसको? संभालना तो हमको पड़ेगा. सरकार का क्या है? सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई जवाब नहीं देगी. जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा. आप जवाब दे देंगे, अच्छी बात है. बात को बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता. मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है. अगर आप इसको अपने आप को संभाल लें तो आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सरकार ने आपकी जान की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, संविधान ने ली हुई है. लेकिन संविधान को कोई समझ नहीं रहा है, कोई लाइव अप्लाई नहीं कर रहा है. सब अपनी मस्ती में है, सारे संस्थान देश के, और सरकार तो मस्ती में है ही. और इस बात को समझ लीजिए. रख दो. कितनी पेमेंट है? 1750. ये हाँ 335. फिर क्या कैश कैश तो कैश कहाँ से ला के? यार मुझे और चाहिए होते हैं खर्चे.
1675, 1650। ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब कैश की प्रॉब्लम होती है। अकाउंट में लेने पैसे यार पहले बताना ना, कैश कहाँ में और भी खर्चे होते हैं भाई, यही तो खर्चा नहीं होता ना। कहाँ से लाएं, बैंक जा नहीं सकता, मेरी टांग टूटी हुई है, कोई है नहीं जाने वाला। कितने देना है 1650, 1675 बनते, 1650। यार खुले हैं आपके पास? हाँ 1500 तो ये है मेरे, 1500 लो यार, 1700 यार, 50 खुले चले गए। 50 है। थैंक यू। ठीक है, 3-4 महीने बाद फिर दोबारा से ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी जेंटलमैन, डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा था कि देखिए, आप एक नागरिक की हैसियत से बता रहा हूँ, आप देश के नागरिक हैं, आपका हक बनता है सरकार पे, लेकिन आपका हक तब बनता है जब सरकार जागरूक हो, सरकार वो हो जो आपके लिए काम करे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हो सकता है सरकार कोई प्लान बना रही है जो मैं नहीं जानता, आप जानते हो। अभी तक मैंने कोई प्लान नहीं देखा है कि ये टेस्टिंग शायद हो भी नहीं रही है, मैंडेटरी टेस्टिंग नहीं हो रही, जिसका बीमारी हो गई वो जाता है टेस्ट करा लेता है। सरकारी अस्पताल जाते हैं तो शायद फ्री में टेस्ट हो जाता होगा, अपने घर से कराते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। हो सकता है आपने कराए भी हों, मैं नहीं कह सकता, इसको आप खुद जानते होंगे, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, आपको खुद समझना होगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है, किसी दूसरे ने आपकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सरकार ने तो बिल्कुल नहीं लेनी है, ये बात तय है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। हमारे पास कमरा था, अपने यहाँ कोई बीमार था, आइसोलेशन कर दिया, लेकिन अटेंडेंट रखना पड़ा। अटेंडेंट ने 1500 रुपये रोज़ लिए, और ये एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। 17 दिन आपको 1500 रुपये रोज़ देने पड़ेंगे, और टेस्ट के लिए हमने 1200 दिए, क्योंकि ये सब अर्बन एरिया है। अगर सेंट्रल एरिया होता तो 2400 देने पड़ते, और सेंट्रल एरिया होता तो अटेंडेंस को 3000 देने पड़ते। अब आप लगा लीजिए, अगर आपको 1500 भी देने पड़े एक दिन के, तो 17 दिन के कितने होते हैं? 17 पंजे 35, 3 17 17 20,000 कुछ तो अटेंडेंट आपका ले लेगा 17 दिन के, और साथ में खाना, रहना, और दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन। अगर आप अस्पताल नहीं जाते और जाना पड़ गया तो फिर आपको जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर लेना पड़ गया तो लेना पड़ेगा। ये सारी बातें माइंड में रखिए। बेशक आप गरीब हों, कम कमाते हों, अस्पताल में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और रश इतना होगा। तो ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ गया तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप कितने बिना पैसे आप क्या कर लेंगे, सोचिए, क्या कर लेंगे बिना पैसे आप? अगर सरकार 322 दिन में टेस्ट नहीं कर पाई, सबके सिर्फ 18.5 करोड़ लोगों के टेस्ट किए हैं, तो ये तो आप भूल जाइए ना कि आपका टेस्ट होगा। कोई टेस्ट नहीं होगा, ये सच बात है। कोई 3 साल इंतजार भी नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल कोविड के लिए बहुत है, वो अपना काम करेगा। लेकिन आपको अपने आप को सही रखना है तो आपको अपना उपचार तो कराना पड़ेगा, चाहे इम्यूनिटी के लिए सही। इसलिए आपको बातें शायद कड़वी भी लगेंगी बहुत लोगों को कि मैं ऐसे क्यों बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये बकवास नहीं है, वास्तविकता है। जबकि अभी 111 करोड़ लोगों के 111 करोड़ लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं। इसलिए नहीं हुए कि टेस्ट स्कीम चल ही नहीं रही है। सच बात तो ये है कि टेस्ट स्कीम ही नहीं चल रही है, और बुद्धू बनाया जा रहा है लोगों को कि हमने सब कंट्रोल कर लिया। मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि क्या कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल किसे कहते हैं? क्या कंट्रोल कर लिया आपने? जो आप क्लेम कर रहे हैं हमने सब संभाल लिया, ये पढ़ के ही मुझे गुस्सा आता है कि कौन मिनिस्टर जो ऐसे बकवास लिखवाता है। मेरे सामने आए तो उसका गृहवान मैं पकड़ लूँ, सच बता रहा हूँ आपको, इतना गुस्सा आता है। क्योंकि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? आप सच बात कीजिए ना, जो सच्चाई है उस पब्लिक को बताइए। आप झूठ कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बिना मतलब। आप पब्लिक की जानों से खेल रहे हैं, पब्लिक की सेहत से खेल रहे हैं। क्या ये मजाक है? आप किसी और बात पे खेलिए, माना जा सकता है। पब्लिक के स्वास्थ्य से आप खेल रहे हैं, पब्लिक की भावनाओं से आप खेल रहे हैं। आपने टेस्ट क्यों नहीं कराए सबके अब तक? ये प्रश्न उठेगा नहीं क्या? सिर्फ 18.5 करोड़ लोग, शायद वो लोग अस्पताल गए हैं, उनको टेस्ट हुए हैं, और वो पैसे वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन जो 85% लोग हैं, जो 111 करोड़ लोग हैं, उनका क्या? आप कहेंगे वो हेल्दी हैं, बीमार नहीं होंगे, क्या गारंटी आपकी?
क्या गारंटी कहेंगे आप? कुछ लोग कहते हैं हम बहुत हेल्दी, हम बीमार नहीं हो सकते, हमें कोविड नहीं लग सकता। ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आपको कोविड ना नुकसान करे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को तो नुकसान कर सकता है ना। ये बात छोटी नहीं। अगर मान लीजिए इन 111 करोड़ लोगों में से आधे भी बीमार पड़ गए तो 55-56 करोड़ होते हैं। इनके लिए क्या अस्पताल है सरकार के पास? कहां से आएंगे डॉक्टर, कहां से आएंगे नर्सेस? सब पैसा मांगते हैं। कहने को वॉरियर कह रहे हैं, लेकिन खर्चा तो हो रहा है। सैलरी भी लेंगे वो, दवाइयां भी चाहिए, कहां से? ये बातें कहने की नहीं है, समझने की है। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहते हैं हमें तो नींद में सोते रहना है, बोलने तो जो बोलता है, सोते रहिए नींद में, कौन रोक रहा है आपको? मेरा काम बताना है, बता रहा हूं। देश की कोविड की स्थिति अच्छी नहीं है, यह भी बता रहा हूं। बोलते ही रहे सरकार, कुछ भी बोलने से क्या काम चल जाता है? सरकार का काम चलता हुआ हमारा काम नहीं चलता है बोलने से। कोई भी कुछ बोलेगा, बोलने को थोड़ी मान लेंगे हम, बोलने को तो नहीं हम मान लेंगे। आप करके दिखाइए, प्रूव कीजिए, आप जवाब दीजिए, आंसर दीजिए कि आपने अभी तक इतने लोगों के टेस्ट क्यों नहीं किए, किधर है वो स्कीम, पब्लिक के पास क्यों नहीं पहुंचे आपके टेस्ट करने वाले। अगर मुझे टेस्ट कराना है तो कॉल करना पड़ेगा लेबोरेटरी को, लेबोरेटरी आएगी, सैंपल ले जाएगी और रिपोर्ट देगी, वो भी ऑनलाइन। अगर मुझे लगा कि हाँ हम पॉजिटिव हैं तो अपने आप अरेंज कीजिए, उन्होंने तो एक टेलीफोन कर देना आपको बस कि आपका नाम आया है, आप ही हैं, आपके साथ और कौन है, उनको क्वारंटाइन कीजिए और अपना 17 दिन का आइसोलेट कीजिए। आपको दूध में हल्दी मिला के पीनी है, इतना काम है उनका बस, बाकी काम उनका नहीं है। एक टेलीफोन हो गया, बात खत्म, कोविड का इलाज हो गया। मरीज जाए भाड़ में, अपने आप अपने को संभालिए, नहीं तो आप बताइए हम क्या बताएं, हम आपको अस्पताल का पता दे देंगे, आप चले जाइए इलाज करा लीजिए। या फिर किसी अस्पताल से आप फोन आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि हमारे पास अच्छे कमरे हैं, सिंगल रूम भी हैं, आप आ जाइए, हम आपका इलाज कर देंगे, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, सब कुछ है, अच्छे अटेंडेंट भी हैं, आप आ जाइए। ये बार बार मैसेज आपको आएगा, 4 बार 5 बार 6 बार आता रहेगा, जब तक उनको वो सोचते हैं उनके लिंक्स हैं अस्पतालों से, लेबोरेटरीज के, और अगर उनको 10-15% भी पेशेंट मिल गए तो उनका गुजारा चल जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये एक तो बीमारी है, ऊपर से एक लात है गरीब को, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो करोड़ों में खेलता है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या हाई प्रोफाइल पर्सन है जिसको 15% में आते हैं, उनको तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। लाखों खर्चना, 3-4 लाख खर्च भी दिया तो क्या हो गया। प्रॉब्लम तो उन लोगों को आएगी जो कोई 400 कमाता है, 500 कमाता है, 300 कमाता है, जिसकी 20,000 भी सैलरी नहीं है, 30,000 सैलरी नहीं है, उसके घर में 4 सदस्य हैं, प्रॉब्लम तो उनको आएगी। अगर ये मार पड़ी तो उन पर पड़ेगी, और एक को अगर लग गई, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर एक को लग गया तो आप तो गए ना काम से, सबको लग जाएगा। ये बात सरकार जानती है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन आप नहीं समझना चाहते। दुख इस बात का है, आप समझेंगे तो आपका परिवार हो सकता है समझ जाए, और ऐसा ना हो एक दिन कि आप कोविड के गिरफ्त में आ जाएं। और याद रख लेना, अगर एक भी व्यक्ति आ गया एक परिवार का, तो पूरे सदस्यों को लेकर डूबता है, और आपके पास सिर्फ पैसा नहीं होगा, कहाँ से लाएंगे इलाज के लिए 5 सदस्यों का, उसके टेस्ट का, क्वारंटाइन भी कराना पड़ा तो दवाइयाँ तो खानी पड़ती हैं। आपके पास अलग कमरा नहीं है तो आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे आप। अगर ये बातें कड़वी लगती हैं तो कड़वी सही, लेकिन वास्तविकता है। हम पागल नहीं है जो बोल रहे हैं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ये भी सत्य है। ये ग्राफ साफ साफ बोल रहे हैं, ये एरिया साफ साफ कह रहा है कि सरकार का कोई प्लान नहीं है। बड़ी बड़ी स्पीचें देना एक बात होती है, और वास्तविकता में कोई प्रोग्राम बनाना दूसरी बात होती है। प्रोग्राम बनाया भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। दावा तो कुछ भी करेंगे आप, दावे से क्या होता है, करके दिखाइए ना।
चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, बात सरकार से है, बात किसी राजनीतिक दल से नहीं है। अब वो कहते हैं, इनके डाटा कहते हैं कि 1,52,000 मरे हैं। हम नहीं मानते, आप झूठ बोलते हैं। आपके 9 लाख तक का अब तक हो चुका है केस, और 9 करोड़ तक का। आप कहते हैं 1 करोड़ हुए, मैं कहता हूँ 9 करोड़ इन्फैक्ट हुए हैं। आप कहते हैं 1,52,000 मरे हैं, मैं कहता हूँ 1,60,000 इसमें कल डिटेक्ट हुए हैं, और जो मरे हैं वो इतने मरे हैं। आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड में आया वो गिनती में आया, जो रिकॉर्ड में नहीं आया वो गिनती में नहीं आया। टेस्ट आपसे होते नहीं, इलाज तो आप क्या करेंगे? वैक्सीन आप क्या लगाएंगे? आप टेस्ट नहीं कर पाते, जो बहुत आसान काम है। 322 दिन में नहीं किया आपने, 18 साढ़े 18 करोड़ का किया, और एवरेज अगर आता है तो 5,74,000 आता है एक दिन का, जबकि होना चाहिए 1.25 करोड़। आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहते नहीं लोगों का इलाज हो जाए, लोगों का टेस्ट हो जाए। शायद ये भी तो माना जा सकता है। खैर, बुराई करना कोई फ़ायदा नहीं किसी की, मैं बुराई करने का बैठा नहीं यहाँ पे। इतना कहूँगा, सब सो रहे हैं, पब्लिक और सरकार। कोई सक्सेस नहीं है कोविड में, कहना गलत नहीं होगा। सरकार को कोई शौक़ नहीं है आपकी हेल्प करने का, कहना गलत नहीं होगा। कोई ऐसी नीति नहीं है कि कैसे संभालें, कोई एक्शन नहीं है, कहना गलत नहीं होगा। और कोई गंभीरता नहीं है देश के अंदर, ये भी कहना गलत नहीं होगा। WHO चिल्लाता रहे, UNO चिल्लाता रहे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? WHO भी आज कहता है वैक्सीन पे गारंटी नहीं हम दे सकते, आज भी कहा है। लेकिन हम सब गारंटी लेके बैठ जाते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है। यही प्रॉब्लम हमको मरवा सकती है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट है, WHO कहता है आज की तारीख में हम नहीं जानते कोविड का क्या हालचाल है, कोविड की क्या साइंस है, कोविड किस तरह मूव करता है, क्या कहता है, आज भी दुनिया में नहीं मालूम है। लेकिन हम सब मान लेते हैं, अगर कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है, कि हम वैक्सीन को ले आए और ये आपका काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, क्या काम चल जाएगा वो ये नहीं बताते। बस ठीक है, वैक्सीन आ गया, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया और बात खत्म हो गई, नेता बन गए। यहाँ बात नेताओं की हम नहीं कर रहे, हम बात हेल्थ की कर रहे हैं। हेल्थ से नेता का कोई लिंक नहीं है, हेल्थ से राजनीति का कोई लिंक नहीं है। सरकार किसी की भी हो, किसी की भी होती या नहीं होती, लेकिन कोविड तो है। कोविड तो गारंटी के साथ आया है कि मैं सबको बर्बाद करके जाऊंगा, और वो कर भी रहा है, और हम समझ नहीं रहे। We are all sleeping। क्या करें बताइए? कितना बोलें, क्या बोलें? बोलने से कुछ नहीं होता, मैं भी जानता हूँ। मैं भी बोल बोल के बक बक करके चुप हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, इस बात को समझना पड़ेगा। हम समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी गलत ही है। लेकिन हम मानेंगे नहीं कि गलत है, यही हमारी प्रॉब्लम है। हम सच्चाई को भी मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा समाज ऐसा हो गया है, सही बात को भी हम मजाक में ले लेंगे, और गलत बात तो गलत है ही। इस बात को हम समझते भी हैं, आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम उसको समझेंगे नहीं, और हम अपनी चलाए जाएंगे। यही हमारी प्रॉब्लम है देश की और हमारे समाज की, क्योंकि हम वास्तविकता को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। खैर, अब मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं, आप जानते हैं 10 महीने से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझते तो इसका इलाज कौन करेगा? आपका अपना इलाज करना होगा, अपने आप को संभालना होगा। आप चाहे बेशक हेल्दी भी क्यों ना हो, स्वास्थ्य भी क्यों ना हो, आपका परिवार कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, संभालना तो आपको ही पड़ेगा। कोई आपको संभाल के नहीं देगा। हाँ, आपकी वजह से लोग दूर जरूर हो सकते हैं कि इसको बीमारी हो गई है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार ने तो आपका साथ जितना देना था दे दिया। सरकार तो बस लॉकडाउन करा देगी, कानून बना देगी आपको फंसाने के लिए, यही कर सकती है। लेकिन गंभीरता गायब है। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी नहीं समझते हैं, अफसोस इस बात का होता है। पढ़ा लिखा भी नहीं समझता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम तो रोज़ सरकार की साइट से डाटा लेते हैं, और आपसे ये वाला डाटा
जो आपके सामने है, इसका अध्ययन करके आपको समझाते हैं ऑन रिकॉर्ड। ये डाटा अलग अलग तारीख का है, लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है, और उससे हम प्रोड्यूस करते हैं ये डिटेल्स जो आपके सामने है। ये डिटेल्स बहुत छोटी है, मैं ये नहीं कह रहा ये डिटेल काफ़ी है, बहुत छोटी है, कुछ लेवल्स हैं इस डिटेल्स के, लेकिन ये ज़रूरी तो है ना। इसकी मैंने URL सरकार को भेजे, लेकिन सरकार की सेहत पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहते होंगे कोई पागल होगा, फालतू टाइम होगा, बस कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी लिखता रहता है, लिखने दो ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सच बात है, फ़र्क तो किसी को नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क तो देश के गरीब को पड़ने वाला है। फ़र्क तो उसको पड़ने वाला है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। उसके बच्चों को पड़ने वाला है, उसके परिवार को पड़ने वाला है। ना किसी मंत्री को पड़ने वाला है, ना ही कोई पुलिस वाले को पड़ने वाला है, किसी को नहीं पड़ने वाला है, न नेताओं को नहीं पड़ने वाला है, राजनीतिक दलों को नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ने वाला तो उन लोगों को है जिनका आगे नहीं कोई पीछे नहीं फाइनेंशियल सोर्स, और वो तो नुकसान में रहेंगे। या मेरा ऑब्जेक्टिव किसी की बुराई करने का ना था ना है, लेकिन सच्चाई जब बोलते हैं तो सच तो यही है कि अपने आप सच्चाई जब बोलते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस सामने आ ही जाता है जिसके बारे में बोलना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो आप ना इंसाफ अपने साथ करेंगे, ना इंसाफ आप दूसरे के साथ करेंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, अब आपको मैंने विस्तार से कुछ बताया, इसलिए नहीं कि मुझे वो सब बताना है, नहीं बताना है। यहाँ एक ही चीज़ है, या तो आप टेस्टों को फटाफट कीजिए, 3 महीने में ख़त्म कीजिए और बता दीजिए कि कितने लोग बीमार हैं, ताकि पब्लिक को पता तो लग जाए कि देश की वास्तविकता क्या है। कोई क्लेम करता है मुझे कोरोना नहीं लग सकता, कोई कहता है कुछ नहीं होता, कोरोना हवाबाजी है। तो ये गलत फहमियाँ क्यों आ रही हैं? ये सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि सरकार लोगों को एजुकेट नहीं कर रही है, सरकार कोई प्लान नहीं दे रही है, बता नहीं रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हम कितनी दूर चल चुके हैं, हमने कितने टेस्ट कर लिए हैं, हमने कितने इलाज कर लिए हैं, या हम आगे क्या करेंगे। कोई भी प्लान किसी भी चीज़ का नहीं। जैसे मैंने कहा, ना टेस्टिंग का प्लान है, ना इलाज का प्लान है, ना आगे क्या होगा उसका प्लान है, और अब तो वैक्सीन भी आ रहे हैं तो उसका भी क्या प्लान है। कोई प्लान नाम की चीज़ ही नहीं है। इतनी बड़ी विडंबना है देश की। देखिए, इतना बड़ा देश, इतनी खतरनाक बीमारी, जिए ना जिए, मरे ना मरे, वो बात की बात है, लेकिन बीमारी तो है। ये बीमारी ठीक भी हो गए आप कहने को कि हम ठीक होके आ गए हैं, जैसा वो कहते हैं डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगी, ऐसा कोई उसकी आप कह सकते हैं गारंटी नहीं। अगर वो दोबारा आ गई, अब जैसे स्ट्रेन आ रहा है, या आप कह सकते हैं वेरिएंट आ रहा है, ये जो डिस्चार्ज होके गए लोग, उनको लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर फिर लग गया तो सीधा ये इफेक्ट कहाँ करेगा? नाक में करेगा, आपकी आँख में कर सकता है, आपके लंग्स में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, फंगस कर सकता है आपने। तो ये इंडिकेशंस हैं। अगर हम भी सावधान नहीं होते हैं तो कौन हमें सावधानी दिलाएगा? देखिए, जब आपके साथ कोई नहीं आपकी सहायता करने के लिए, आपको खुद सहायता करनी पड़ती है अपनी, और उसी को कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस। जब आपको कहा गया है कि आप सेल्फ रिलायंट हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, इसका मतलब आपको अपना ध्यान खुद रखना है, कोई नहीं रखेगा। इस बात को हम समझने में बहुत समय लगाते हैं। हमको ये बात बड़े स्मार्ट वे में समझनी चाहिए कि हमको खुद करना है जो कोई हमें नहीं कर सकता। सरकार पे आशा थी कि सरकार बहुत अच्छी है, कुछ करेगी, लेकिन अब लगा, ऐसा दिखता है कि सरकार में कोई रियलिटी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, व्यावहारिकता नहीं है। सरकार भाषणों में एग्जिस्ट करती है, टेलीविज़न में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सड़क पे सरकार नहीं है। ऐसा साबित हो चुका है। जब सरकार नहीं होती तो सरकार जो बनाते हैं, जो वोट देकर अपना काम एमपी को बनाते हैं, एमपी सरकार बनाते हैं,
तो फिर उन्हीं की कर्तव्य बन जाता है, उन्हीं लोगों का, कि वो स्वयं सरकार समझें और अपना ध्यान अपने आप रखें। और यही आज स्थिति है, क्योंकि सरकार जब टेस्ट ही नहीं कर पा रही है तो आप सरकार से क्या आशा रखें। ये भी एक सच्चाई है। सरकार टेस्ट करने में असफल रही है, लोग सरकार को दबाव नहीं बना पाए हैं टेस्ट करने के लिए, लोग भी असफल रहे हैं। और रिजल्ट ये है कि जो भी अभी तक का डाटा आ रहा है वो सिर्फ 14% लोगों के टेस्ट के बेस पे आ रहा है, बाकी डाटा नहीं है, बाकी कोई प्लान भी नहीं है। जब टेस्ट का प्लान नहीं है तो इलाज का प्लान तो होने का मतलब ही नहीं है, और इलाज का प्लान नहीं होगा, टेस्ट का प्लान नहीं होगा तो आगे वाले लोगों को क्या हाल होगा हम नहीं कह सकते। और पैसा तो आपको हर चीज़ में लगेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोविड को लेना पड़ेगा। ये बात मैं अब अंत में कह रहा हूँ आपसे। रोज़ तो मैं बात करता ही हूँ, मैं थोड़ा सोचा कि आपको बता दें साफ साफ, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और अपने आस पड़ोस का आपको समझाना चाहिए कि भाई अपना टेस्ट करा के देख तो लो कि क्या हाल है आपके शरीर की। नहीं तो बढ़ गया तो बाद में बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, याद रख लेना। एक बार ये गंध लग गई, ठीक है, कुछ महीने आप कहेंगे एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं, हम स्वस्थ हैं, कुछ समय के लिए आप ठीक हैं, लेकिन जब वो डिमिनिश हो जाएगा, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी वो स्ट्रेंथ, तो फिर आप वीक हो जाएंगे और कोविड का काम आसान हो जाएगा। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार कहने से एक बात को कुछ मतलब नहीं निकलता है। सारांश में मैं कहूँगा कि आप अपने को संभाल लीजिए, समय अच्छा नहीं है, कोविड पूरी क्रांति पे है और कोविड किसी से डरता भी नहीं है, ये भी सच है। ठंड भी है, पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के हाल बुरे हैं। इंग्लैंड का बुरा हाल है, ब्राज़ील का बुरा हाल है और देशों में, यूरोप में कई देश में बुरा हाल है। अमेरिका तो मर ही चुका है इस मामले में और हमारा देश भी बुरे हाल में है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते, हम न्यूज़ देना नहीं चाहते, हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम में हैं। नहीं बताइए, लेकिन प्रॉब्लम दबेगी तो नहीं, सामने तो आ ही जाएगी। ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। न्यूज़ ना बताएं, सरकार ना बताए, डाटा ना दे, लेकिन डाटा दब तो नहीं जाएगा। 15% या 14% डाटा दे के आपको खुश कर देंगे, लेकिन वो भी जानते हैं अंदर से सच्चाई क्या है। अगर सरकार का काम डाटा दबाना है या एक्सप्लोर नहीं करना है